Heisenberg Uncertainty Principle. Now, as the name suggests, it was given by Heisenberg in 1927. Uncertainty means something is not certain. What is not certain related to atom, that we are going to discuss. Actually, according to Bohr's model, a particle has only, क्या बोल सकते हैं कि Bohr's model के according radius is fixed, energies can be calculated, but when de Broglie came into picture, he said that electron has dual nature, that is particle nature as well as wave nature, and then that is applicable for dual nature is applicable for mainly for microscopic particles. For macroscopic or semi-micro particles, it has no significant effect, that has very negligible wave character, but electron, proton, neutron means microscopic particles, that has dual character, and that's why their energy and position cannot be measured accurately. Okay? That is actually Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, it is not possible to measure exact position and exact momentum of microscopic particles with accuracy. Means position or momentum को accurately we cannot find out, ठीक है, simultaneously, accurately and simultaneously. Means to determine exact position and exact momentum simultaneously, it is not possible. Means एक साथ दोनों को exact हम find out नहीं कर सकते, ठीक है. So this as per mathematics, so mathematically according to this principle, delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. So this is the minimum uncertainty in the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum. What is delta x? It is uncertainty in position, and delta p, it is uncertainty in momentum. Okay, so their product is greater than or equal to h upon 4 pi. For numerical purpose, we use delta x into delta p equal to h upon 4 pi. That's it. Okay. Now you know, as p equal to m into v, linear momentum equal to mass into velocity. That implies delta p equal to m into delta v. So it means delta x into m delta v is greater than or equal to h upon
4 pi, or delta x into delta v equal to or greater than or equal to h upon 4 pi m. M is mass of the microscopic particle. So this is definition of Heisenberg uncertainty principle. अगर कोई पूछता है कि define this Heisenberg uncertainty principle, so आप लिखोगे it is not possible to measure exact position and exact momentum of microscopic particles with accuracy and simultaneously. ठीक है? Or you can write it as simultaneously here, that it is not possible to measure exact position and exact momentum of microscopic particles simultaneously with accuracy. You can write it as, I think you could understand कि simultaneously position और momentum या position और velocity cannot be determined. ठीक है? तो delta v क्या होगा यहाँ पे? Definition तो लिख दिया आपने. Now what is delta v? Delta v is uncertainty in velocity. Right? For numericals, what we use? We use delta x into delta p equal to h upon 4 pi, or delta x into delta v equal to h upon 4 pi m. These are for numericals. We write equal sign, equal to sign. Okay? Right. Now, case 1. If delta x is small, that means uncertainty in position is less. That means if position is, okay, position is measured accurately, then what about delta p and delta v? Because their product is equal to h upon 4 pi. If it is small, then it should be large. Then delta p or delta v is large, means uncertainty in momentum or velocity is large. We cannot measure position or measure momentum or velocity accurately, and vice versa. Like case 2, if delta p or delta v is small, then obviously delta x is large. What it means? That if uncertainty in position or uncertainty in velocity is small, that means momentum or velocity of the microscopic particle is measured accurately, then position cannot be measured accurately. Right? And third case, if delta x equal to 0,
then delta P is infinity. Got it? That means if we measure the position accurately, then momentum cannot be measured. Position delta V, delta P or delta V is infinity. That means then momentum and velocity cannot be measured at all. We cannot measure them. समझिए? Simple है? This is all definition and its explanation. Now significance. Significance. अब देखो, anything if we would like to see, then what happened? Light fall on it, and that light comes to our eye. Light उसको क्या करेगी? Illuminate करेगी, है ना? Light की presence में देख सकते हैं ना, रात को अंधेरा हो, कोई लाइट ही ना हो, तो कोई चीज दिखती है? नहीं देख पाते. इसका मतलब लाइट इज एसेंशियल टू सी एनीथिंग. तो कोई चीज अगर हमें देखनी है ना, take an electron. This is an electron. Now electron is a microscopic particle, you know that. Now this particle, if we are going to see, then what happened? The light fall on it, and that light reflected back to our eyes. Okay, so the photon will strike. Photon has certain frequency, certain wavelength. Okay, and that photon will strike it and come back to our eyes, then we can see it. What you know, microscopic particles, they are very, very small in size, very, very less in mass. They can be easily deviate from its side. Okay, so when this photon strike and it goes back from this side, this electron will move from here, because that photon has some energy. When energy strike it, it moves from here. Now light comes from this side, but it is moving somewhere else. So exact position we cannot measure. So according to optics, position of a particle can be measured within प्लस माइनस लैम्डा. मतलब प्लस माइनस लैम्डा के बीच में देख सकते हैं. इसके बीच में पार्टिकल को वी कैन सी. मतलब ये पूरा एक सर्कल बना, अगर इससे छोटा पार्टिकल होगा, देन वी कैनॉट सी इट विद एक्यूरेसी. इसलिए उसने बोला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लिए हमें ये फंडा लगेगा कि देयर इज नो डेफिनेट पाथ. तो एज पर दिस, ये वाला जो चीज है, इसको अगर हमें पोजीशन को एक्यूरेट करना है तो क्या करेंगे हम? टू गेट एक्यूरेट पोजीशन, we have to decrease wavelength of light या wavelength of radiation. तो wavelength अगर हमने डिक्रीज कर दी, तो ऑब्वियसली wavelength डिक्रीज करने से फोटोन की एनर्जी बढ़ गई.
अगर एनर्जी बढ़ गई तो हाई एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करेगा तो और फास्ट वहां से मूव कर जाएगा ना, तो क्या होगा, उसकी मोमेंटम और स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी। यही हमने पढ़ा ना अभी। तो इसका मतलब कि लैम्डा डिक्रीज किया टू accurate the position, to get the accurate position, then momentum and velocity becomes very uncertain। समझिए। और अगर हम मान लिया मोमेंटम को और वेलोसिटी को सर्टेन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि लो एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करे। अब वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, जो पोजीशन है और अनसर्टेन हो जाएगी ना, समझिए। इसलिए अगर 2 लैम्डा से बड़ा पार्टिकल है देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑन इट। इसलिए डेली लाइफ में इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो इफेक्ट ऑन आवर डेली लाइफ बिकॉज बाय आवर आईज वी कैन सी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और सम सेमी माइक्रो, but microscopic particles we cannot see by naked eyes। ठीक है। सो इसलिए Heisenberg uncertainty principle has significance only in case of, yeah, it is applicable to microscopic objects। Done। तो ये पार्ट हो गया अपना। छोटे शब्दों में हेजनबर्ग को एक्सप्लेन करना हो कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम इकट्ठे एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। बस इतना सा अगर लिख दोगे तो डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम of a microscopic particle simultaneously and accurately। That is the smallest words used। इससे कम यूज करोगे तो भैया वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा टीचर। ठीक है, ओके डन। ये समझ में आ गया आपको। मैंने आपको भी बता दिया कि इम्पैक्ट्स ऑन आवर डेली लाइफ। अगर कोई पूछे what is the impact of Heisenberg uncertainty principle in our daily life, तो आप लिखोगे there is no impact of Heisenberg uncertainty principle in our daily life because in our daily life we come across macroscopic objects or semi microscopic objects। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए it is impactful, okay, and then that cannot be seen by naked eyes, okay, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट। इसलिए इसका इम्पैक्ट डेली लाइफ पे नहीं है। क्लियर। नाउ विद रिगार्ड टू फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल के फेलियर में इसका क्या रोल था, उसने क्या बोला था बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर। पहली बात, इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर एंड इट मूव्स in well defined circular paths। well defined circular paths जिनको क्या बोला था, called orbits। but according to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to have well-defined path for the electron. So he replaced well-defined paths
probable paths. So he defined the probable paths for electron. ठीक है, that's why Bohr's model is not extended to other atoms, because then it leads to wave mechanical model of atom. Quantum mechanical, it leads to the next atomic model, that is quantum mechanical model of atom, that we are going to discuss in the next session. Quantum mechanical model of atom. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो था वो फिर नेक्स्ट आया. बोर्स मॉडल फेल हो गया क्योंकि उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था. ठीक है, और उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एन एटम दे मूव्स इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स. ठीक है, जो कि एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम और वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड simultaneously and accurately according to Heisenberg, right? So that's why he replaced those well defined paths with probable paths. उसने बोला कि there is probability of finding the electron rather than well defined paths. ठीक है, उसने बोला था orbits, इसमें कंसेप्ट दिया अगला ऑर्बिटल, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, है ना. समझ गए इतना? जो वेल डिफाइंड पाथ थे उनको उसने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके, नाउ इसका दूसरा जो सिग्निफिकेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन cannot exist in nucleus. अगर क्वेश्चन आए कि why electron cannot exist in nucleus, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन, अगर एक क्वेश्चन आए तो इसके लिए क्या लिखना है आपको. क्योंकि अगर लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन is inside nucleus. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इक्वल टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस. देन डेल्टा एक्स, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. लाइक आई एम इन दिस रूम नाउ and if I am not going out, that means what is my uncertainty, कि कितना मैं अनसर्टन हो सकता हूं, इक्वल टू साइज ऑफ द रूम. तो अब बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस में कहीं होगा ना, किसी भी पोजीशन पे. ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू साइज ऑफ न्यूक्लियस. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इज इट विजिबल? यस. So size of nucleus होता है 10 raised to power minus 15 meter. So that means delta x is 10 raised to power minus 15 meter. Right? हमने सपोज किया है कि इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड न्यूक्लियस, फिर हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल है. कैसे प्रूव करेंगे वो आगे देखो. तो यू नो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 pi m. That implies delta v is equal to h upon 4 pi m into delta x. So what is h? Planck's constant value you know, 6.626 into 10 raised to power minus 30
4 joule second, 4 and 3.14. What is the value of m? Mass of the electron 9.1 into 10 raised per minus 31 kg. And what is delta x? 10 raised per minus 15 meter. So if we solve it, value comes out to be 5.79 into 10 raised to power 10 meter per second. This value comes. इसका मतलब uncertainty in velocity is greater than the velocity of light, because you know what is the velocity of light? It is 3 into 10 raised to power मीटर पर सेकेंड, ये होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट. If it is greater than speed of light, that is impossible, because no particle can travel more than the speed of light. तो उसकी अनसर्टेनिटी उसकी वेलोसिटी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती. तो आप लिखोगे it is impossible for any particle to have uncertainty in velocity greater than the velocity of light. So it means electron cannot exist inside the nucleus, it is in the extranuclear part. That's why electron cannot exist inside the nucleus. It should be in the extranuclear part. Right? That's it. तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है. पहले सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना. फिर आपको क्या करना है कि उसके लिए डेल्टा वी फाइंड आउट करना है. डेल्टा वी अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा रहा है, दैट मींस दैट पार्टिकल कैनॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. गॉट इट? सो वी हैव प्रूव्ड कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल that electron cannot exist inside the nucleus. Do one numerical on it. Okay. तो न्यूमेरिकल करते हैं. Question is, a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured,
within an accuracy of 2%. Calculate the uncertainty in its position. So this is the question. तो क्वेश्चन है अपने पास, गोल्फ बॉल है, इसका मास है 40 ग्राम एंड स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड. सो सी mass is 40 gram. So in kilogram, what is the value? What is the value in kilogram? 40 or 1000 means 0.04 kg, and velocity is 45 meter per second. So what is uncertainty in velocity? Yes, uncertainty in velocity. So here velocity is 45 meter per second and it is measured with an accuracy of 2%. That means it is 2 by 100. So 0.9 meter per second. Mass we have, uncertainty velocity we have. So we have to calculate uncertainty in position. Now very easy. Only one point is there कि इसका क्या करना है कि स्पीड जो है कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%. दैट इज द मेन थिंग. तो हमने वो 2% का फंडा यहां कर लिया. समझे? अब you know according to Heisenberg Uncertainty Principle, delta x into delta v equal to h upon 4 pi m. So from here delta x is equal to h upon 4 pi m delta v. So h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. 4 into 3.14. Mass is 0.04 because SI unit में लेना है kg. Delta V is 0.9. Okay, it is in kg and it is meter per second. So by solving it, what is the value we get? We get 1.46 into 10 raised power minus 33 meter. So this is the answer. कैसे किया समझ में आया? सबसे पहले हमने मास लिखा, that is 40 gram. We convert it into kg, that is 0.04 kg. Then velocity is 45 meter per second. Change in velocity, that is 45, 2% of 45. So it is 0.9 meter per second. Then according to Heisenberg's uncertainty principle, delta x into delta v h upon 4 pi m. So delta x is h upon 4 pi m delta v. So by putting the value we get the answer. चलो बाय.